Assalamu alaikum. Participants, welcome to Sindh Educational Organization. Today we have an online session about personality development, and our guest speaker will be Miss Wardah Muzammil. She is an MBA graduate in marketing, and she is also founder of Animal Care Association of the Pakistan. So without any further delay, over to our guest speaker. Over to you, ma'am. Thank you so much for introducing me. Can you also enable the screen sharing? Yes, ma'am, you can share now. All right, thank you. Wait, let me just share my screen. So, thank you for introducing me. There is some introduction that I have for myself as well. So, I'm Wardah Muzammil, and as far as my profession is concerned, I run an education consultancy, and I also work with the marketing department of a company that's located in Dubai. Apart from that, I'm a social worker and also an animal activist. So I would like to welcome you all to this personality development for personal growth workshop. So let's get started. In case you guys have any questions, please wait till the end and then the floor is all yours. All right. So firstly, personality hai kya? Before we dive deep into all the other things like the personality types and all, I want to discuss what is personality. So personality is basically said to be a public image of a person. अब ये layman language में या आजकल जैसे generation है ना that discusses के vibes किसी बंदे से क्या आ रही हैं, किसी से positive vibes आ रही हैं, किसी से negative अच्छी आ रही हैं या नहीं. Basically that is what your personality is. अब फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि जैसे ही अ प्रोफेसर वॉक्स इन टू द क्लासरूम, जैसे ही हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई टीचर जैसे ही आता है, वी डोंट नो देम, लेकिन हम कुछ ना कुछ उनके बारे में जजमेंट एक फॉर्म कर लेते हैं, एक परस्पेक्टिव बना लेते हैं कि ये स्ट्रिक्ट लग रहे हैं या ये बहुत चिल लग रहे हैं या फिर दिस विल बी अ गुड टीचर, इनके साथ मजा आएगा. So this is what your personality is. It is something that you predict about someone even before they start speaking. मतलब आप किसी के बोलने से पहले ही उनके बारे में जो एक इमेज फॉर्म कर लेते हो ना, दैट इज पर्सनैलिटी. तो बेसिकली ये होती इन्हीं चीजों के बेसिस पे जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है सारी. So coming towards the personality types, there are four main personality types, which are diplomats, analysts, sentinels, and explorers. Diplomats are said to be dreamers, analysts are said to be the thinkers, sentinels, they live to please everyone, and the explorers, they live to seize the day. अब जो कोडिंग है ना यहाँ पे नीचे हुई हुई, दिस इज बेसिकली for what is mentioned here for all the personality types. Here I stands for introversion, X for extroversion, N for intuition, S for sensing, T for thinking, F for feeling, J for judging, and we have all the personality types mentioned here. अब when you Google the 16 personality types, क्योंकि total जो personality types है ना हमारी वो 16 होती हैं. So I want you to do yourself a favor and look for this test online, 16 personality types, or conduct this test for yourself. अब इससे होगा क्या? This will basically help you to know yourself better, okay, what and how you are as a person, and also it will help you with your career path as well. Like once you graduate from your university, it will help you know okay where and how well do you fit in an organization और आपको कैसे fit करना चाहिए उसमें. Now for example, if you end up to be a debater, तो आपको पता होगा या if you're good at communication तो आपको पता होगा कि आपको किस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन सी वाली जो भी जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं, what would be the best fit for you. So this is how the personality type test is going to help you. Now these are some of the personality types that I mentioned here, but I won't bore you guys to death with this, so I'm moving forward. So अब personality को हमने ये कहा कि it is a public image of person. So personality development is basically the improvement of all your traits such as communication skills, आपकी interpersonal skills, your attitude towards life, and your personal behavior and traits towards life, and how well you communicate with others as well. Now one of the most important things about your personality is how well you communicate. So communication skills, अब यहाँ पे लिखा है that communication skills जिन लोगों की होती है ना, they tend to have a better and impressive personality. अब इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो जो TED Talk speakers होते हैं या motivational speakers basically होते हैं. You know how you're automatically attracted to someone जो बहुत अच्छी एक speech दे रहा है, like you want to listen to them. लोग क्यों पैसे दे के TED Talks पे जाते हैं? इसीलिए ना, because like such people have such impressive personalities
And it is because of their communication skills that you would want to pay to listen to them. So this is something that you should really work on, because that's going to strengthen the bond that you have with people, and it will also help you stand out from the rest of the crowd. अब कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ये नहीं होता कि आप कितना अच्छा बोल रहे हो. It is also how well you're listening to others, and also how responsive you are when you're communicating with the other people as well. It also depends on how confident you are and the volume and clarity of your voice as well. अब जैसे अगर slides हों और मैं बस आके उन्हें read कर दूं, तो I'm sure no one would want to hear that. So to bring clarity and volume to whatever you're delivering and how you're delivering your speech, that really matters. So here is a picture which shows that आपकी communication skills are not only कि आप बोल क्या रहे हो, but also your non-verbal communication. For example, your body language, how well you're communicating with other, how empathetic you are when you're communicating with others. आप लोगों को कितना अच्छा सुन सकते हो, उनकी बात कितने अच्छे से respond कर पा रहे हो. So here is the 30-day self-improvement challenge. अब ये एक ऐसी चीज है that I think this is the best thing that you can do for yourself. अब ये छोटी छोटी चीजें हैं. For example, they can be waking up an hour earlier, या to meet new people, to quit smoking, या फिर go for a 20-minute walk, or they can be as huge as volunteering for social cause or something like that. अब for example, I remember one of TED Talk speaker जिसने एक बात की थी कि whenever you get out of bed, तो हमेशा ना अपना बेड बना के निकलो. This is because at the end of the day, if you come back home, अगर आपने जिंदगी में और कुछ भी नहीं उसने अचीव किया ना, तो at least at the end of the day when you'll come back home, तो एक आपको अपना बिस्तर जरूर बना हुआ मिलेगा. That will be like a sense of achievement for you. तो ये जो छोटी छोटी टास्क है ना, इनका मतलब बेसिक मकसद यही है that they will give you a sense of achievement, little things that you're doing for yourself. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने लिए टाइम निकाल के अपने लिए ही करो. तो जैसे here it says day 30 पे volunteer for a social service. अब मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी सोशल वर्क किया है for the past 8 years, I have never been paid for it, and I do not want to get paid for it, and that is because it's something that I love doing, जो मैं अपने लिए करती हूँ. मतलब it just makes me happy. So choose one of the things out of all this that you want to do for yourself, or like वो time निकाल के ना make that thing about yourself and do it for yourself every day for that sense of accomplishment. So one of the most important things that I want to reflect upon today is assertive training. अब assertiveness का मतलब ये होता है that you communicate directly and in a very honest manner, but without hurting anyone's feelings. Definition तो इसकी ये है, but there are a lot of good examples that will help you out in your professional life as well. For example, सबसे बड़ी example इसकी ये है setting boundaries. अब यहाँ पे it has mentioned कि अभी तो you guys, I'm sure you aren't working, but once you step into the real world, you get to know कि job सिर्फ फिर 9 to 5 नहीं होती. People will still, they will keep bugging you even after 5 p.m. or they would want कि अभी जो है काम करते रहो. Your bosses will keep on doing that. So you need to set boundaries for this. And one of the most, amazing things I've seen with people who have set boundaries, they have the most successful relationships. Or relationships की मैं बात कर रही हूँ, every type of relationship. This can be your friendship, this can be your relatives, this can be your family, even your intimate relationships. हर तरह की relationships. वो वाली relationships that have been the most successful जो मैंने अपने इर्द गिर्द हमेशा देखी है ना, they're always the ones who have set boundaries for themselves. Or second cheese about setting boundaries is that you always have to decline politely. Learn to say no, but in a very polite manner. So I'm going to share this personal experience. वो ये है कि I was only 13 years old when I went to a psychologist for some shit that wasn't really going my way in my life. So I went to see a psychologist, or obviously those were my teenage years. तो वो वाले साल होते हैं ये when you're all aggressive and anger, ये वाली ये सारी feelings they're just coming up. तो उसने मुझे एक बात बताई which helped me throughout my life, और उसने मुझे कहा कि whatever you want to say to anyone, वो कह दो. मतलब अपने दिल की बात ना कह दो, but say it in such a polite manner कि अगले को पता भी ना लगे. So like अगर मैंने गाली भी किसी को देनी हो ना, मैं इतने प्यार से दे दूं कि उस बंदे को फील ही ना हो उस तरह से. So like the main thing here is कि अपनी tone जो है ना, always keep that very polite. Like no matter, even if you want to say no, say it very very politely. That's going to help you and also going to help
the rest of the people as well. So one of the most important things about personality development is that you have to step out of your comfort zone. अब comfort zone basically है क्या? Comfort zone is basically a place where everything is under your control. जहाँ पे सब कुछ आपके मुताबिक जा रहा है, लगता तो बहुत अच्छा है कि wow, you know, everything's going according to how I wanted. But the thing is, you never get to grow. So you have to step out of the comfort zone for this. Now, here are 5 ways that you can step out of your comfort zone. I want you to go through these. Meanwhile, I'm going to tell you an incident that will depict the whole thing, okay, how getting out of the comfort zone is going to help you. तकरीबन 5 to 6 months back, I went on this trip to Nathia Gali with my friends, and it was one of the best trips ever. था 5 दिन का plan वो trip, and that was the trip जो हम पता नहीं सालों से plan कर रहे थे, and it finally happened. तो जब हम गए वहां तो those 5 days were amazing क्योंकि सब कुछ तो accordingly हो रहा था जैसे हमने plan किया था. You know, all the finances are going accordingly. जब हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस वक्त जाना चाहते हैं, सब कुछ बहुत हमारे according हो रहा था, and those were like the best days. फिर ऑल्दो हमारी ट्रिप 5 दिनों की थी, बट समहाउ इट एक्सटेंडेड टू इट्स अ 6 डे. अब वो 6 डे बहुत ही अनप्लान था बिकॉज आवर कार ब्रोक डाउन, और दैट वाज लाइक द मोस्ट अनकंफर्टेबल डे ऑफ आवर लाइव्स क्योंकि वी हैड नथिंग प्लान्ड. और हमारा जो 5 दिन का स्टे था ना वो बहुत अच्छे रिजॉर्ट में था. लाइक हम हम अपनी विंडो खोलते होते थे ना तो हमारे शीशे से बाहर इतना प्यारा व्यू नजर आता था, लिटरली दैट यूज्ड टू बी लाइक हेवन ऑन अर्थ. और वो जो 6 डे था ना उस पे जब मैंने विंडो खोली, जिस होटल में हम जाके रहे वहां पे मैंने विंडो खोली और सामने से लोग पान थूकते हुए जा रहे थे, एंड लाइक दैट वाज लाइक द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज दैट आई हैड एवर सीन. तो वो एक दिन ने जो मुझे सब कुछ सिखाया था ना, दोज 5 days couldn't. और नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट तो मुझे यही होता है कि यू नो वो एक दिन जिस दिन मैं कंफर्ट जोन से बाहर रही थी, दैट इज व्हेन आई लर्न द मोस्ट. और मुझे अभी भी वही दिन याद आता है. लाइक आई ऑलवेज लाफ एट इट टू कि लाइक इतना मेरी कंफर्ट जोन से बाहर था और मुझे सब कितना बुरा लग रहा था, बट जस्ट लुक एट इट लाइक हाउ इट हैज शेप्ड मी. इट हैज लिटरली चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ माई लाइफ. तो जरूरी नहीं है कि to get out of the comfort zone you have to go to a trip. Start as small as you can. For example, if you're sitting on the back benches तो थोड़ा सा आगे जाके बैठो, like sit on the front. कभी दुनिया आगे से भी जाके देखो कि कैसी लगती है. That's really going to change your perspective and your point of view for the whole world as well. So here are some pictures which show that the success always happens when you're out of your comfort zone. तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तो सब कह देते हैं कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेकिन ये तो सब बताना भूल ही जाते हैं दैट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एज वेल. सो हियर आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स दैट आई हैव. फर्स्टली, whenever you're going through something stressful, please try to identify कि मतलब वो है क्या चीज that's stressing you out, और वो feeling क्या है that you're getting, like you're feeling angry, tensed, irritable, what is it? Then you have to write it. There are different coping mechanisms. You can either write it down, you can listen to music, you can talk it out with a friend, you can ask someone for help, or you can talk positively to yourself. Positive self-talk नहीं होती. That really helps a lot. Then thirdly, mindfulness. अब एक की सिचुएशन के ना आप 4 काम कर सकते हो. या तो यू कैन अवॉइड इट, जो कि बहुत कम होता है. यू कैन आइदर ऑल्टर द सिचुएशन, वो भी बहुत कम होता है, बट अडेप्ट टू इट, accept it, and try to change it. Like try to live the situation जिसमें भी आप हो. Like feel whatever you're going through. And lastly, use some relaxation techniques. For example, this can be deep breathing, meditation, yoga, music and art therapy, or aromatherapy, or any such thing that helps you out. Now here are some tips for confidence building. So to build your confidence, you need to firstly overcome your self doubts, and that comes along with positive self talk. These two things go hand in hand. So, like whenever you're feeling low or you feel like you can't do something, just stand in front of a mirror and tell yourself that you got this. Because, to be very honest, the thing about public speaking and confidence building is that you fake it till you make it. Because I wasn't ever born a great speaker. It's not like I was born with these skills. ये बहुत टाइम लेके और बहुत प्रैक्टिस के साथ एंड विद अ लॉट ऑफ फेकिंग आई हैव रीच्ड हियर. और नाउ दैट आई कंडक्ट workshops, or now that I can speak publicly and I love doing it, it's only because, you know,
फेक इट टिल यू मेक इट, ये तो मेरा मोटो बन चुका हुआ था लाइफ का. आई वाज लाइक आई नीड टू डू दिस बिकॉज आई लव डूइंग दिस, आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ऑन द स्टेज. बट ऑब्वियसली टू गेट देयर आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल. So ये चीजें वो हैं that will help you out, which is overcoming your self doubts and giving yourself a lot of positive self talk. Like, stand in front of the mirror and talk to yourself and the positive self affirmations that you can do this and you got this. So confident body language basically includes you using your hand gestures, your facial expressions, the tone of your voice as well. Like it's not like कि आप बस एक ही tone में जो है ना खड़े होकर slides पढ़ते जाओ, but to you know get the attention of the audience, you need to make sure that your tone goes up and down as well according to what you want to emphasize on, and then your body movements and other things as well. So, lastly, here are some self care tips that I would like you guys to look upon. And you can do these at any time of the day, whenever you feel like you're low. You can look at these and do something for yourself, which again will give you a positive, uh, outlook to life and also give you a sense of achievement as well. So, this is my favorite quote that is related to personality development and all the self care, that is that there's only one corner of the universe that you can be certain of improving, and that's your own self. So I've kept it short, and if anyone has any questions, please go ahead. And thank you so much for listening. Thank you so much, madam. Participants, if you have any question, please raise your hand. Then I will allow you to ask question. Yes, Farhan, you can ask question. अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक इशू जो होता है इंट्रोवर्ट्स को, वो Hmm. ये कि नो बोलने का जो इशू है उसको कैसे कवर अप किया जाए? Well, actually, this comes with a lot of practice. Kyunki, and it starts as small as कि whenever someone's saying something to you कि अच्छा मुझे ये काम कर दो या कुछ ऐसे कर दो, you need to be mentally prepared for this as well. कि जब भी कोई मुझे कुछ ऐसा कहे तो I have to also have an option of saying no. तो ये चीजें जो है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर माइंड कि अच्छा इफ समवन सेज समथिंग टू मी, हाउ विल आई बी एबल टू से नो. लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड आल्सो लुक अपॉन इट कि व्हाट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू से नो. Hello, ma'am. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Ma'am, this is Sumbu Sheikh. I'm also a motivational public speaker and trainer. I just want to ask you a question कि जैसे हम motivational public speaker काम कर रहे होते हैं और इसमें एज ए मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ इसमें आप मेंटल हेल्थ को भी साथ अटैच कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जो आज आज की जो मेरी स्पीकर है, आप कहना चाहिए कि टुडे इज द बेस्ट टॉपिक एंड माय फेवरेट टॉपिक एज वेल. तो इससे लाइक इस टॉपिक के साथ स्किल डेवलपमेंट या इंटरपर्सनल स्किल्स एंड मेंटल हेल्थ कैसे दोनों आपस में मैच करते हैं या अटैच होते हैं? थैंक यू. अच्छा, so basically मतलब to be a better person and to have a better personality, obviously you need to take care of yourself first too. So that comes with a lot of self care as well. जब तक आप बेहतर इंसान नहीं बनोगे या बेहतर you cannot be a better person for the rest of the world, कि आपकी आउटलुक तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप इंटरनली अपनी टेक केयर नहीं कर रहे. So basically you need to do all these self care things for yourself as well in order to be a better person for the rest of the world, which is then again your personality. अच्छा मैम, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि फ्रेंडली सर्कल में बाकी सारी चीजें को देखकर, तो उस चीज को कैसे कवर अप करेंगे, वो बाउंड्रीज हम सेट करें? Am I audible? Yes, ma'am. अच्छा, बीच में वो माइक का इशू हो गया था इसलिए. तो योर क्वेश्चन वाज कि इवन इन अ फ्रेंडली मैनर बंदा नो कैसे कहे या बाउंड्रीज कैसे सेट करे, राइट? तो मेरे ख्याल से तो व्हेन यू हैव अ मोर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, नो कहना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज दोस्तों के अराउंड यू कैन बी लाइक नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा. बट देन अगेन वो भी एक फैक्टर होता है कि दोस्तों के अराउंड यू डू नॉट वांट टू हर्ट देम. तो जस्ट से इट पोलाइटली कि अच्छा चलो आज अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, मे बी इन अ व्हाइल, चलो थोड़ी देर में कर दूंगा, या चलो आज नहीं मेरा दिल कर रहा, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम.
So maybe something like that can be an alternative जो ये भी ना लगे that you're totally saying no to it, but like you're able to help as well. So like look for alternatives. It's not like you exactly have to say no. You can say कि अच्छा चलो maybe I'll see next time, like, or maybe you know I'll look for other alternatives, या चलो अगर मैं नहीं ये करके दे रहा तो I'll look for someone else कि अभी मेरे लिए नहीं possible तो मैं किसी और को इसकी जगह ढूंढ के दे देता हूँ. So you know something like that. You can always shift to an alternative for that. Okay, madam, we have a question in chat. What's that? Nargis is asking that how does personality development impact career success and advancement opportunities? ठीक है. अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करियर सक्सेस पे तो मेरे ख्याल से बहुत ही डायरेक्ट उसका वो है ना इम्पैक्ट. वो इसलिए बिकॉज करियर तो आपका तब शुरू होता है ना व्हेन यू स्टार्ट गोइंग आउट फॉर इंटरव्यूज. तो आपकी पर्सनालिटी तो वो मेरे ख्याल से तभी जज करना शुरू कर देते हैं व्हेन यू गिविंग इंटरव्यूज. तो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो जब तक आपकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई होगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन इंटरव्यूज एज वेल. तो करियर सक्सेस तो मेरे ख्याल से उसका स्टार्टिंग से ही पता लगता है. एंड इवन फिर जब एडवांसमेंट की बात आती है तो दैट्स हाउ पीपल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स एज वेल कि अच्छा इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये वाला बंदा यू नो दे कैन डू बेटर इन दिस फील्ड एज वेल. क्योंकि चलो बाकी पता है जो भी स्किल्स होती है ना वो कहीं ना कहीं आप सीख ही लेते हो कि जो भी किसी जॉब के लिए स्किल रिक्वायर्ड है या यू नो एक्सेल आपने सीखना है जो भी वो कुछ ना कुछ करके आप सीख ही लेते हो. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब होती है ना ये कोई कंपनी आपको नहीं सिखाएगी. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ये चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी और यही चीजें आपको यू नो दे विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Participants, if you have any question, please raise your hand. अच्छा मैम, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर कर सकती हैं. I've just sent it in this chat box. मीटिंग वाले में भी ये जो अभी Zoom पे जहाँ पे everyone sending their questions वहाँ पे मैंने भेजी है. So you can download it. नहीं तो फिर I'll send it to someone from your team and like they can forward you. Okay, madam, we have another question in chat. अच्छा, the question is that how can we effectively communicate with someone we meet for the first time, because you know the first impression is the last impression. So it's an important skill and making a good impression can leave a lasting impact on the person we meet. Acha, the thing is that when you're meeting someone for the first time, just be yourself. That is the best advice that I can give. Do not try to be someone else के you know मैं अगर ये उससे बातें करूंगा तो मे बी वो मेरे से इस तरह इम्प्रेस हो जाएंगे या you know मैं उनसे इन टॉपिक्स के बारे में बात. Just be yourself. क्योंकि इसी तरह these are the type of connections that will build. जो चीज नेचुरली फ्लो करेगी ना दैट इज व्हाट विल बिल्ड. और जो चीज आप जिस पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के या यू नो एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके वो कह रहे हो कि नहीं आई नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स और ये वो दैट विल नेवर लास्ट. तो जस्ट मेक श्योर दैट whatever conversation you're having or you know whatever you're saying, it is all natural and it's coming from the heart. Madam, we have another question in chat. How can I get attention of others while talking to them? I don't get attention from them while I'm talking. Acha. So it also depends on the tone of your voice as well and the quality of words or things that you're speaking. So पहले तो you know make sure the tone of your voice is not really all simple. You make sure you have some words जिन पे आप extra emphasis कर रहे हो so that people are interested to hear you as well. And make sure whenever you're speaking तो सिर्फ मतलब वर्बली आप कम्युनिकेट ना करो, लोगों से नॉन वर्बली भी करो. फॉर एग्जाम्पल यू नो हैव हैंड मूवमेंट्स एज वेल while you're talking क्योंकि that's what attracts and grabs the audience attention as well. Yeah, anyone that you're talking about to, like जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ी audience हो, it can be anyone that you're talking to. So this is what actually attracts people while you're initiating conversations as well. कि आपकी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और क्वालिटी नहीं बट ऑल्सो योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल. सो डू लुक इनटू इट, लाइक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना उसको भी लाइक टेक अ लुक एट इट ऑन गूगल एज वेल दैट हाउ क्योंकि आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ वेज टू इम्प्रूव दैट and like some of them I did go through in the presentation as well. So do look into that. वो मैंने यहाँ पे भी share किया है and you can take a look on Google as well. I'm sure it'll be able to help you better.
Participants, any question? We are running out of time. Madam, there is a question about stage phobia. Wait, how to overcome stage phobia? अच्छा, इसकी सबसे अच्छी टिप और पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी वो यही है कि जब आप स्टेज पे जाके खड़े होते हो ना, तो जस्ट नो कि जो आप बोलने वाले हो ना, वो आगे जो जितने भी लोग बैठे हैं उनको पता भी नहीं है कि आपने क्या बोलना है। और इस चीज पे यकीन कर लो, बिकॉज ऑनेस्टली दे डोंट नो। और अभी इस प्रेजेंटेशन में भी ना देयर वुड हैव बीन 2-3 दफा कि ऐसी चीजें मैंने कह दी हैं जो मुझे मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मैंने यहाँ पे बोलनी है, बट आई एम श्योर नन ऑफ यू फिगर्ड आउट। और वो इसीलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर सेइंग, और फॉर दैट आई नीड द टिप दैट आई विल गिव यू इज दैट stand in front of a mirror or whatever presentation that you're presenting or you're wanting to present, उसको मिरर के सामने ना 1-2 दफा जरूर प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज हाउ इट विल गेट बेटर। क्योंकि शुरू शुरू में तो करना पड़ेगा, बट विद टाइम इट विल जस्ट फ्लो नेचुरली। शुरू शुरू में यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट टू। सुम्बुल आल्सो हैज अ क्वेश्चन, राइट? Yeah, if you don't mind, ma'am. या श्योर, गो अहेड। ओके, थैंक यू। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक जब आप स्टार्टिंग में अपना करियर लेते हैं, जैसे मेरा अपना है मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, तो मैं ये पूछना, जैसे मेरी तरह के और भी बहुत से बिगिनर्स होंगे, कभी वो काफ़ी ऐसी चीज़ों के साथ वो पजल हो जाते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पे पैनिक हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनको इनिशियल स्टेप क्या उठाना चाहिए, या लाइक उनको स्टार्टिंग में भी अपनी कम्युनिटी के लिए उनको वेरी स्टार्टिंग जो उनका फेज है वो क्या होना चाहिए। लाइक आप अपना भी बता सकती हैं, क्योंकि हमें पर्सनल स्टोरी और पर्सनल जो एक सक्सेस स्टोरी होती है वो ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। या फिर लिख के भेज दो बेशक चैट बॉक्स में। श्योर मैम, आई आल्सो रिपीटेड वंस अगेन कि लाइक आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप जैसे एक मैं पब्लिक स्पीकर काम कर रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में या जो बिगनर होते हैं उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती कि हाउ टू स्टार्ट वेरी फर्स्ट स्टेप, कि हमें पहला वो स्टेप क्या होना चाहिए या किस तरीके से हमें अपना स्टार्टिंग लेना चाहिए, या आप अपनी भी स्टोरी बता सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती हैं हम सबको आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आई थिंक इसमें यही है कि फोकस ऑन व्हाट यूर बेस्ट एट। आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा लिंक्डइन देखो ना, तो यू वुड सी दैट आई एम ऑलवेज वल्नरेबल। मतलब मेरी जो पोस्ट होती है ना, वो उन चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही होती हूँ जिसके बारे में दुनिया नहीं बात करती। फॉर एग्जाम्पल आई वुड टॉक अबाउट गेटिंग आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो कि बहुत बड़ा टैबू है, दुनिया नहीं इसके बारे में बात करेगी, बट आई वुड डू इट। तो ये वो सारी चीजें हैं, आई एम श्योर जो पूरी दुनिया गोज थ्रू इट। बट मेरा ये पॉइंट है कि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो हूँ ना बहुत ओपनली अपनी, जब जैसे मैंने मेंशन किया कि आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई वाज 13। लोग ये बातें भी छुपाते हैं, दे डोंट टेल दिस, लेकिन आई वांट टू मेक दीज थिंग्स नॉर्मल। तो मैं इसीलिए इन सारी चीजों के बारे में भी बात करती हूँ, सो दैट द वर्ल्ड नोज कि। और इसीलिए आई थिंक कि मेरी लिंक्डइन पे ना बहुत अच्छी ऑडियंस आती है, क्योंकि दुनिया इन चीजों के बारे में ये बातें सुनना चाहती है, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट। तो फिगर आउट थिंग्स जो आपके नॉर्मल में हो रही हैं इन द सराउंडिंग, एंड मतलब दे नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन दुनिया उनके बारे में नहीं बात करी। जैसे अभी मैंने रिसेंटली लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट की विच वॉज अबाउट टू नॉट थिंक बिग। लोग कहते हैं ना थिंक बिग, के कोई बड़ा पर्पज होना चाहिए ये वो। तो मेरी रिसेंट लिंक्डइन पोस्ट थी नॉट थिंक बिग, एंड आई वाज लाइक कि प्लीज डोंट थिंक बिग। मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, बड़ी बड़ी चीजों में ना ढूंढो, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। Okay, madam, thank you so much. We have few questions, but we are only left with 1 minute. Thank you for this very informative session. I hope we will have another information session regarding this. If you guys need any more time, do let me know. We can, carry on this session again whenever you want. And Okay, thank you okay. so much for We will have having me. any Thank you so much. special topic in depth. It was, I think, over a general topic. So we will select Yes. another topic and we will inshallah invite you. All right, perfect. And thank you so much, Ali, for coordinating all this. It's been a pleasure. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much, participants. See you next time, All right. inshallah. Thank you. Hafiz.